खोज के बाद पेप्पे कई पवित्र रत्न अपने साथ इंग्लैंड ले गए, जबकि एक हिस्सा भारतीय संग्रहालय कोलकाता में सुरक्षित रखा गया। एक शताब्दी के मौन के बाद अप्रैल 2025 में जब हांगकांग के सूटबीज में इनकी नीलामी की घोषणा हुई, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश पर संस्कृति मंत्रालय ने तत्परता से हस्तक्षेप किया, क्योंकि ये रत्न केवल रत्न नहीं, स्वयं बुद्ध के शरीर धातु है। ये अमूल्य विरासत 127 वर्षों बाद पुनः स्वदेश लौटे, सार्वजनिक निजी साझेदारी का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर। रत्न अवशेषों की इस ऐतिहासिक वापसी पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, भगवान बुद्ध की पवित्र पिपरहवा निशानियां 127 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद स्वदेश वापस आ गई। ये जानकर हर भारतीय को गर्व होगा। ये पवित्र निशानियां भगवान बुद्ध और उनकी महान शिक्षाओं के साथ भारत के घनिष्ठ संबंध को दर्शाती है। ये हमारी गौरवशाली संस्कृति के विभिन्न पहलुओं के संरक्षण और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को भी दर्शाती है। ये प्रदर्शनी पिपरहवा रत्नों की पुनर्वापसी और पुनर्जनन का उत्सव, और आज ये भारत में पहली बार एक साथ प्रदर्शित हो रही है। 8 खंडों में निहित ये प्रदर्शनी पुरातत्व से लेकर दर्शन तक आयामों को समेटे हुए एक समग्र दृष्टि प्रस्तुत करती है। और इस अविस्मरणीय यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। The Ministry of Culture, Government of India, welcomes you to this historic exhibition. The story of the Buddha relics discovered at Kapilavastu begins nearly 2,700 years ago, when the teachings of the Buddha guided the path of humanity on this sacred land. After the Mahaparinirvana of the Buddha at Kushinagar, his corporeal relics were divided among 8 republics. The Shakya clan enshrined their share at Kapilavastu, constructing a stupa that is today known as the Piprava Stupa. Over time, the memory of Kapilavastu faded. In 1898, the Zamindar of Piprava, William Claxton Pepe, excavated a mound at the site. At a depth of 18 feet, a sandstone coffer was discovered, containing the sacred relics of the Buddha along with precious jewels. Further excavations carried out in the 1970s revealed even earlier reliquary vessels from the Shakya period, found at deeper levels beneath the stupa. Among the 5 Mauryan period reliquary vessels, one bore an inscription in Brahmi script which reads, Sukiti Bhatinam, Savaginikanam, Saputdalanam, Iyam Salillidhane, Buddhas Bhagavate Sakyanam. This inscription records that the sacred relics of the Buddha were enshrined here by the renowned Shakya brothers together with their sisters, sons and wives. It serves as definitive proof that these relics are those of the Buddha himself. The jewels recovered from this site are outstanding examples of the artistic excellence and craftsmanship of the period. Crafted from gold, pearls, ruby, agate, topaz, amethyst, coral, carnelian and crystal, they take the form of flowers, leaves, birds, swastikas and the Three Ratna. This assemblage represents the largest collection of Buddhist jewels recovered from a single site. Following the discovery, Pepe took several of the sacred jewels to England, while a significant portion was preserved at the Indian Museum, Kolkata. After more than a century of absence, a decisive moment arrived. In April 2025, when the jewels were announced for auction at Sotheby's in Hong Kong, the Ministry of Culture intervened promptly. पुष्प, पत्तियां, पक्षी, स्वस्तिक और त्रिरत्न
ये अब तक किसी एक स्थल से प्राप्त सबसे बड़ा बौद्ध रत्न है। Recognizing that these were not merely Jews. Chị ăn không ai, chị ăn không ai. Government of India took immediate action. As a result, this invaluable heritage returned to India after 100 Lia rung thọt à? Casket sekolah kan relax game bertiada nah with slate nah आज हम भगवान बुद्ध के पिपरहवा रत्नों की वापसी का उत्सव मना रहे हैं, जो केवल रत्न है, बल्कि स्वयं बुद्ध की उपस्थिति है। ये वही भावना है जिसे bài tỷ bề lấy nó tận mấy cái nào sò bọc mày này nào mà còn thấy đang là anh làm rồi như thế này riêng sao là không ai cái thứ bọc mày ai mượn có cho vậy nhiều đồng tiền như thế bọc mày luôn ai mượn có cho ok chắc bạch tự ai là so đấy nè slide cho đậm Sebuah sila jarak ta. Quán mở mấy cái quán chẳng thành được slide này
ok nhưng thật là nhà tù này còn chuyện này mình không trái nè mồ cái này kẹt quá xong Honey mustard. xong rồi With a bit lowy. You do it on the Không phải cái để sao về là nó đi đi on. đó mình từ đây ô thì làm vậy trường mình